Well, today we will discuss a very interesting topic regarding residue. What is a residue? How can we define, how can we formulate this term residue? And then we will discuss how can we evaluate the residue of the function, and then a very important result, residue theorem. Okay. So, and we know a singular point or singularity of fz is a point z naught at which fz is not analytic. We know all these definitions. Okay. We have already discussed a singular point. What is singular point? So, a singular point or singularity of fz is a point z naught at which function is not analytic. And second, we have already defined a singular point z naught is said to be isolated singular point if there exists a neighborhood of z naught which does not contain any other singularities, which does not contain any other singularity or singular point of fz, then that point is called isolated singular point. And we have already know that when z is equal to a is an isolated singular point of fz, then we can expand fz in a Lorentz series about z is equal to a, and that Lorentz series can be represented as fz is equal to summation n 0 to infinity a n z minus a power n plus summation n 1 to infinity a minus n z minus a power minus n. And these terms can be write like this way: a minus 1 z minus a power minus 1, a minus 2 z minus a power minus 2, and so on, and this term as it is. Clear? And now there are various methods for determining the coefficients of a Lorentz series. One, without using the integral formula. In fact, when you calculate the coefficients, we have these two formulas. Okay? So, when you calculate a and a1, a2, a3 and so on, apply this formula. And when we evaluate a minus n, means a minus 1, a minus 2, a minus 3, then we have this formula. Okay? So, with the help of these formulas, you can evaluate the coefficients of this Lorentz series, but there are various other methods by which you can evaluate the coefficients of Lorentz series. So, for evaluating complex integrals, we may use the formula for a minus 1. Okay? A minus 1 in a very elegant and simple way. A minus 1 will be called the residue of fz. So, this means that this coefficient is nothing but known as residue of the function. Okay? The coefficient of 1 over z minus a. The coefficient of z minus a power minus 1 is nothing but known as residue of fz at z is equal to a, and that powerful method may also appear for evaluating certain real integrals. Okay? तो ये जो हम फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, रेजिड्यू कैसे निकालना है. इनफैक्ट रेजिड्यू कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला. बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1 you can evaluate a minus 1, and that one is the residue of the function. But we have some other ways to evaluate the residue of the function at z is equal to a. Okay? So, the coefficient of z minus a, the definition of residue is the coefficient of z minus a power minus 1 in the expansion of fz around an isolated singularity is called residue of the function fz, is called residue of fz at that point. This means the residue of fz at z is equal to a is minus 1. Okay? A minus 1. And since we know a minus n is equal to 1 over 2 pi I integral over c closed curve fw over w minus a minus n plus 1 dw, where n varies from 1, 2, 3 and so on. Now, put n is equal to 1. So, when you substitute n is equal to 1, we get a minus 1 is equal to 1 over 2 pi I integral fz dz. So, when you put n is equal to 1, so minus 1 plus 1 0. So, this result is 1, and we obtain fw dw, that can be written as fz dz. Okay? So, this means that residue, this result is equal to residue a minus 1 is equal to residue fa, means residue of the function fz at z is equal to a. Clear? So, residue fa is equal to 1 over 2 pi I integral fz dz. So, in this way you can evaluate the value of the residue. But question is this here, how can we evaluate
integral value. So integral value, integral fz dz can be written as 2 pi I residue fa. तो इस मेथड से अगर आप रेजिड्यू निकालना जानते हो, ठीक है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप के इंटीग्रल्स को इवेलुएट कर सकते हो, राइट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को आप इवेलुएट कर सकते हो, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई आई रेजिड्यू एफ ए. नो क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन वी इवेलुएट रेजिड्यू एफ ए विदाउट इवेलुएटिंग द इंटीग्रल्स, राइट. सो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई रेजिड्यू एफ ए. तो हमें अब कंप्लेक्स इंटीग्रल जो है वो आपको इवेलुएट करने हैं, राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ अ रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, राइट. So before moving the formula for evaluating the residue of the function, let us remind this definition poles. If the series fz is equal to this Lorentz series with negative powers has a finite number of terms, say m, so that a minus m is not equal to 0 and all other terms 0, then z is equal to a is called pole of order 1. A pole of order 1 is called a simple pole. Okay? तो हमें अब कैलकुलेट करना है रेजिड्यू, कैसे कैलकुलेट करना है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, ओके, एट z इज इक्वल टू a, राइट. जब आपके पास जो पोल है उसका ऑर्डर 1 है या पोल ऑफ ऑर्डर 2 है या पोल ऑफ ऑर्डर m है, ठीक है, तो रेजिड्यू आपने कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट रिजल्ट. इफ fz हैज ए सिंपल पोल, ओके, fz हैज ए सिंपल पोल दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z is equal to a, then residue fa is equal to, then residue fa can be evaluated by using this formula, limit z tend to a, z minus a fz. So this one is the formula for evaluating the residue of the function at z is equal to a. Now question is, how can we evaluate this formula? Okay, how can we prove this formula? So let us suppose z is equal to a, which was given, z is equal to a is a pole of order 1, z is equal to a is a pole of order 1. So around this pole, around this singularity, okay, we can develop a series like this Lorentz series, and that Lorentz series is fz is equal to a naught plus a1 z minus a plus a2 z minus a square plus and so on, a minus 1 z minus a power minus, बाकी की टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे. Reason is we have given z is equal to a is a pole of order only 1, of order 1, right. Now multiply both sides by z minus a. Okay, so when you multiply, we need fz into z minus a. So fz is this, so multiply z minus a. So z minus a fz is equal to this result. Okay, and from this you can consider this limit z tend to a. So taking limit as z tend to a. So when z tend to a, then it becomes limit z tend to a, z minus a fz. Okay, z minus a fz is equal to, तो ये भी 0 हो जाएगा, this term tend to 0. Okay, this term 0, okay, only we obtain this term. So a minus 1, and a minus 1 is nothing but residue fa. Okay, residue fa. Otherwise आप residue इस method से निकालते हैं, ठीक है ना, that one is more complicated, right. So a minus 1 calculate the residue. Okay, but here residue can be evaluated by using this limit. Okay, limit z tend to a, z minus a fz. fz हमें पता है, z minus a के साथ आप multiply करोगे, right, and taking limit you will get the residue. That one is a simple way to evaluate the residue of the function. Now second one is, if fz has a simple pole at z is equal to a, then residue fa is equal to phi a over psi a. So if fz is equal to phi z over psi z, then residue fa can be evaluated as phi a over psi dash a. So let us suppose fz is equal to this. Let us suppose fz is equal to this, phi z over psi z, where psi z is equal to, let us suppose this psi z is equal to z minus a fz. Okay, so fa is not equal to 0, and when z is equal to a, this psi a is equal to 0, right. Z is equal to a, psi a is equal to 0. Now taking limit z tend to a, z minus a phi z over psi z, because we know residue in previous result, we know how can we evaluate a minus 1 residue fa, how can we evaluate limit z tend to a, z minus a fz. Now here fz is phi z over psi z, so substitute this term as it is, okay, and phi z is phi a plus z minus a phi dash a plus and so on, just expand this, okay, and psi z is psi a plus z minus a psi dash a plus and so on by Taylor's theorem. Okay, now this result, अब देखिए ये z minus a, this term and this term cancel, okay, because phi a, from this phi a is equal to 0,
phi a is equal to 0 from this result. Phi a minus a. So this phi a is equal to 0. So this term is 0, right? Now remaining term this and then next term. So this term and this term cancel. So we obtain phi a plus z minus a phi dash a plus and so on, and this first term psi dash a plus z minus a psi double dash a plus and so on, and taking limit z tend to a. तो जब आप ये लिमिट लोगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास phi a over psi dash a. So we obtain finally phi a over psi dash a, right? So this means limit this result and this result is equal to phi a over psi dash a, and this is nothing but a minus 1. Okay, this one is nothing but residue fa. So residue fa is equal to phi a over psi dash a. So this completes the proof. Clear? तो जब भी आपने रेजिड्यू निकालना होगा तो इन दोनों मेथड से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो. ओके, और ये सारे के सारे मेथड, ये दोनों मेथड तब अप्लाई करने आपने व्हेन वी हैव गिवन fz हैज ए सिंपल पोल. ओके, सिंपल पोल मींस ऑर्डर 1, राइट? सो नेक्स्ट वन इज if fz has a pole of order n at z is equal to a, then residue fa is equal to 1 over n minus 1 factorial dn minus 1 over dz n minus 1 z minus a power n fz, and at z is equal to a. This one is the formula. And how can we evaluate? We know if z is equal to a is a pole of order n, then by Lorentz series we have last term this a minus n z minus a power minus n, and all other terms 0. Clear? So fz is equal to a naught plus a1 z minus a plus a2 z minus a square plus and so on, a minus 1 z minus a power minus 1 and so on, plus a minus n z minus a power minus n. Purpose is to evaluate this term. This one is residue fa. तो ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई z minus a power n. Okay, so then we obtain z minus a power n fz, z minus a power n fz. So इसको आपने बनाना है, राइट? सो z माइनस a पावर n fz इज इक्वल टू a नॉट z माइनस a पावर n, a1 z माइनस a पावर n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, a माइनस 1 z माइनस a पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a माइनस n. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड n माइनस 1 टाइम्स with respect to z and putting z is equal to a means by taking limit z tend to a. Okay, so we obtain dn minus 1 over dz n minus 1. So differentiating both side by n minus 1 times. Okay, this result is equal to n minus 1 factorial a minus 1. Okay, तो ये term ये आ जाएगी. Okay, this term we obtain this way when you differentiate both side n minus 1 times with respect to z, and n minus 1 factorial as it is, and a minus 1 is residue fa. So from this you can evaluate residue fa. So residue fa is equal to 1 over n minus 1 factorial dn minus 1 over dz n minus 1 z minus a power n fz, and at z is equal to a, and this completes the proof. So when we have given fz has a pole of order n at z is equal to a, then apply this formula for evaluating residue of the function at z is equal to a. तो अब आपने ये तीन फार्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है, तीन फार्मूले अप्लाई करने हैं फॉर इवेल्युएटिंग residue of the function z is equal to fz at z is equal to a. Okay, so when z is equal to a is an essential singularity, okay, then the above method fails. In such cases the residue at an essential singularity is obtained by expanding fz about z is equal to a in Lorentz series and identify a minus 1, the coefficient of z minus a power minus 1. ठीक है ना, essential singularity जिसमें infinite number of terms नेगेटिव पावर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स. ओके, तो आप कब तक डिफरेंशिएट करते रहोगे, राइट? तो आप उस केस में आप एक्सपेंड करिए, ओके, एफ जेड को अबाउट जेड इज इक्वल टू ए इन ए लॉरेंट एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज, एंड देन आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए पावर माइनस 1. And in many cases the residue of a pole z is equal to a can be found by putting z is equal to a plus t in fz and expanding it in powers of t where magnitude of t is quite small. So in some cases we have this type of result. Okay, so let us discuss 1-2 problems related to this. Determine the poles of the following functions and residue at each pole. Okay, तो आपने तो एक पोल निकालने हैं, ठीक है ना. पोल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंगुलर पॉइंट, राइट? सो एवरी पोल इज ए सिंगुलर, ओके, but every singular point is not a pole, not vice versa, right? So there is a difference between a singular and pole. Pole is a singular point, ये clear है, ठीक है.
तो अब देखिए वी हैव these three results. Okay, we have already derived these three results. Okay, so let us discuss this first problem. Now in first problem, fz is equal to z square plus 1 over z square minus 2z, and this can be written like this way, right? Z minus 0 and z minus 2, and this result can be written as phi z over psi z. This one is a function of z, this one is a function of z. Okay, now we have two singularities, mean two poles. Okay, the poles of fz are z is equal to 0 and z is equal to 2. So at these poles, at these singular points, find the residue. Okay, find the residue. So residue fa at z is equal to a means z is equal to 0 or z is equal to 2. Okay, so phi z over psi dash z, use this formula. Okay, this formula at z is equal to a, at z is equal to a. Okay, so this phi z over psi dash z is z square plus 1 divided by, differentiate this 2z minus 2. Okay, differentiate this term. Okay, differentiate this 2z minus 2 at z is equal to a, and when you calculate z is equal to a, z is equal to a means a is 0. So when you substitute a is 0, you will get minus 1 by 2, and when a is 2, you will get phi by 2. So these are the residues at z is equal to 0 and z is equal to 2. So in this way you can evaluate the residue. तो इस problem में मैंने ये जो result है ये apply किया है. Okay, so in this way you can solve similar type of more problems related to evaluation of residue. Now second result is fz is equal to z square minus 2z divided by z plus 1 square z square plus 1. So in previous problem we have z square minus 2z divided by z plus 1 square z square plus 1. So we have this result. Okay, so denominator is z plus 1 square as it is. Okay, z square plus 1 is z plus eta and z minus eta, no problem. Okay, so here we have z is equal to minus 1 is a pole of order 2, clear, of order this 2, and z is equal to minus eta and z is equal to plus eta. We have two more poles of this function. Okay, so calculate z is equal, residue at z is equal to minus 1. So residue f minus 1, calculate this one. तो इसका ऑर्डर 2 है, और ऑर्डर 2 अगर ये ऑर्डर 2 है तो आप इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो. ठीक है, यूज दिस फार्मूला फॉर इवेल्युएटिंग द रेजिड्यू, राइट. सो 1 over 2 minus 1 फैक्टोरियल d over dz. तो देखिए अगर n 2 है तो यहाँ 1 है. So d over dz, z plus 1 square, z square minus 2z divided by z plus 1 square, z square plus 1 at z is equal to minus 1, and solve this this d over dz, calculate this one, we obtain this, and substitute z is equal to minus 1. So when you substitute z is equal to minus 1, you will get minus 1 by 2. Okay, you just simplify this one and solve this problem, right. So in this way you can evaluate all these type of problems. So when you calculate all these things, so remember this term and this term cancel, clear, and simplify you will get, so this square and z square plus 1, and differentiate this one 2z minus 2 minus differentiate this one and second. Okay, so you can solve by using basic principles of differentiation, right. And second part is f eta, f z is equal to minus eta or z is equal to plus eta. So z is equal to eta. So residue f eta. So calculate residue at this point, right. So residue f eta is limit z tend to eta, z square minus 2z, z minus eta divided by z plus 1 square, z minus 1, z plus 1. Okay, to apply this formula z minus a f z. So z is equal to a, at z is equal to a, calculate the residue. So z is equal to a means z minus a. So z is equal to eta means z minus eta. Okay, so this one. So this term and this term cancel and simplify. Okay, we obtain this value, limit z tend to eta, z square minus 2z divided by z plus 1 square into z plus 2, and substitute this z is equal to eta here, you will get this one, and simplify you will get 1 plus 2 eta over 4. So in this way you can evaluate residue at z is equal to plus eta, at z is equal to plus eta, clear. Similarly you can evaluate residue at z is equal to minus eta. So residue f minus eta is, so minus eta means z is equal to minus eta means z plus eta. So z plus eta this term and this term cancel, and again simplify you will get 1 minus 2 eta over 4. Okay, तो ये तीनों फार्मूले जो हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ करके देख लिए हैं, राइट. 1 से ज़्यादा ऑर्डर होगा तो कैसे रेजिड्यू निकालना है, ठीक है. इफ़ f z is phi z over psi z, how can we evaluate the residue, right. So
solve few more problems related to this topic, residue. How can we evaluate the residue of the function at poles, right? Now, concluding remarks is, so far we are in a position to evaluate contour integrals whose integrands have only single isolated singularity. So, when we have given single isolated singularity, then we can evaluate the complex integral problems, okay? And inside the contour of integration, we shall now see that this simple method may be extended to the cases when the integrand has several isolated singularities inside the contour, and this extension is very simple, and for that we have residue theorem. So, what is residue theorem? This residue theorem is a very powerful and elegant theorem in complex integration, and using the residue theorem many complicated real integrals. Next lecture we will discuss how can we evaluate the complicated real integrals by using residue theorem, okay. So, using the residue theorem many complicated real integrals can be evaluated, and this theorem is useful in evaluating the contour integrals where the closed contour contains several singularities inside, okay. Then how can we solve this type of problem? And we have used the term contour and closed contours. We have already discussed what is contour. Contour is a continuous chain of finite number of smooth arcs, and closed contour means closed contour is a piecewise smooth closed curve without points of interaction. For example, boundaries of a circle, ellipse, rectangle and triangle. So, these are the examples of closed contours, okay. So, this one is the statement of residue theorem. So, what is residue theorem? This theorem is very important, okay. So, with the help of this residue theorem you can evaluate complicated real integrals, okay. So, if fz is analytic, understand this term, okay. Fz is analytic at all points inside and on a closed curve, inside and on a closed curve. Fz is analytic at every point within and on a closed curve, except a finite number of isolated singular points, except a finite number of isolated singular points within that closed curve C. Then integral over C fz dz is equal to, integral over C fz dz is equal to 2 pi I into sum of the residues at the singular points within C. Suppose we have z is equal to A, z is equal to A is a singular point, z is equal to B is one more singular point, z is equal to C is another singular point. Then how can we apply this theorem? In that case, integral over C fz dz is equal to 2 pi I into residue Fa plus residue Fb plus residue Fc, means sum of the residues at the singular points within C, okay. So, this one is a closed curve. So, within and on a closed curve, right, function is analytic except all these points, except all these points. So, A1, A2, A3, A4, A5 and so on AN, okay, except these points, okay. This function is analytic, right. So, around each of the isolated singular points, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी singular points हैं, राइट, ये जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं इसके आसपास, इसके अराउंड आपने छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, और सर्कल्स इस ढंग से बनने चाहिए कि ये क्रॉस कट ना हो, right. So, around each of the isolated singular points A1, A2, AN, draw small non-intersecting circles, C1, C2 and so on Cn, lying wholly inside C. तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपने सर्कल इतना बड़ा बना देना कि ये बाहर चला जाए, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स आपने बनाने हैं और इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ओके, विद सेंटर्स एट z इज इक्वल टू A1, A2 एंड सो ऑन AN रिस्पेक्टिवली, ओके. तो जब आप इस थ्योरम को प्रूव करोगे तो इसकी पहले ज्योमेट्रिकली इसका सेटअप बना लो, ठीक है. सो वी हियर ड्राई क्लोज्ड कर्व एंड देन फ्यू सिंगुलर पॉइंट्स. सो अराउंड ईच सिंगुलर पॉइंट्स ड्रा स्मॉल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स which wholly inside lying inside this C, okay. So since fz is analytic in the multiply connected region bounded by C1, C2, Cn, then by Cauchy theorem for multiply connected region. देखिए इस कर्व के अंदर इन सर्कल्स के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो एरिया है, ओके, दिस एरिया, इन दिस एरिया द फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर.
here in this area the function is analytic everywhere, right? So we can apply Cauchy's theorem, because in that case use the Cauchy theorem of multiply connected curves. Okay. So since fz is analytic in a multiply connected region bounded by C1, C2, Cn, then by Cauchy theorem for multiply connected region we have integral over C fz is equal to fz dz minus all these integrals, integral over C1, integral over C2, integral over Cn is equal to 0. So by multiply connected region Cauchy theorem, by using Cauchy theorem, this result is equal to 0, and this result means integral over C fz dz is equal to integral over C1 fz dz plus integral over C2 fz dz and so on plus integral over Cn fz dz, right? Now by using the definition of residue, तो residue की definition क्या बोलती है? Residue की definition में residue fa1 this, okay, is equal to 1 over 2 pi I integral over C fz dz. Clear? And this means this integral value is 2 pi I into residue fa1. Similarly, residue fa2 is this, residue fan is this. So use these results here, then this integral over C fz dz is equal to this 2 pi common, okay, within the bracket residue fa1, residue fa2 plus residue fa3 plus residue fan, right? This means sum of the residues at a1, a2, an. This completes the proof. Okay. So with the help of residue theorem you can evaluate this complex integral, right, if we have more than one singular points. If we have more than one singular points, then apply residue theorem for evaluating this type of complex integral, remember. So this theorem is very, very important. Okay. So we will discuss two very important problems, ठीक है? इन प्रॉब्लम्स को आप देख लो अच्छे से कि इनको कैसे सॉल्व करना है, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप थोड़े और 5-7 प्रॉब्लम्स और कर लीजिएगा तो फिर ये अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके. सो इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर c z minus 3 divided by z square plus 2z plus 5 dz where c is the circle. C is the circle. Number 1, mod z is equal to 1. Mod z is equal to 1 means minus 1 less than z less than 1 means this minus 1 and this plus 1. ओके, ये बना और इसका सर्कल बनेगा इस टाइप से सर्कल बनेगा, राइट? और इसके आपने अब पोल्स कैलकुलेट करने हैं, राइट? सो पोल्स ऑफ दिस आर गिवन बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. सो व्हेन यू कैलकुलेट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 वी गेट -1 प्लस -2 आइटा, -1 प्लस -2 आइटा. सो -1 ये आ गया, ये आपका ओरिजिनल है. ओके, -1 ये आ गया और +2 आइटा मींस दिस, इसका मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है. क्लियर? तो इसका रेजिड्यू तो 0 होगा. ओके, एंड -1 -2 आइटा ये पॉइंट भी इससे बाहर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल के अंदर ये कंप्लीट जो फंक्शन है ये एनालिटिक है. So when this whole function is analytic within this closed curve C, then by Cauchy theorem this integral is 0. Clear? So both the poles this and this lie outside the circle C, which is equal to mod z is equal to 1. Therefore fz is analytic everywhere within C, and when fz is analytic everywhere, then apply Cauchy theorem. Okay, Cauchy theorem, and by Cauchy theorem this integral is equal to 0. We get the result. ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके ये जो डिनोमिनेटर है इसमें दो सिंगुलरिटीज आ रही हैं, बट बाय चांस क्या हो रहा है कि ये दोनों सिंगुलरिटीज बाहर है. क्लियर? तो बाहर है तो आप डायरेक्टली कॉची थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, राइट? नाउ इन सेकंड प्रॉब्लम z is equal to we have this. Okay, in second problem z plus 1 minus 1 magnitude is equal to 2. Okay, अब देखो पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो दो पोल्स हैं इसमें मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ये जो पोल है ये लाई इनसाइड है, ठीक है, और दूसरा पोल जो है वो बाहर है. अब ये अंदर कैसे है? ठीक है, ये बहुत जरूरी है. तो ये क्या z प्लस 1, मैं ये लिख रहा हूं z प्लस 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू, दिस मीन्स -2 इज लेस देन z प्लस 1 माइनस आइटा लेस देन 2. ओके, तो मैं दोनों तरफ -2 -1 प्लस आइटा ऐड कर रहा हूं, लेस देन z लेस देन 2 -1 प्लस आइटा.
ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो ये बना -3 प्लस आइटा लेस देन जेड लेस देन 1 प्लस आइटा। ओके, अब देखिए ये पहले इसको बनाते हैं कि ये सर्कल कितना बड़ा है। -3 प्लस आइटा, सो 1 2 3 एंड प्लस आइटा, एक तो ये बना, एक ये पॉइंट बना, एंड 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, एक ये पॉइंट बना। ओके, एक ये पॉइंट बना, तो ये आपका बना डायमीटर, राइट। अब ये डायमीटर बना तो आपका सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। अब देखिए -1 प्लस 2 आइटा, सो -1 प्लस 2 आइटा, ये जो पॉइंट है ये अंदर है, और -1 माइनस 2 आइटा, ये जो पॉइंट है -1 प्लस 2 आइटा। ओके, ये जो पॉइंट है ये -2 आइटा, ये बाहर है। क्लियर, तो पहले रफली इसको कैलकुलेट कर लिया करो, राइट, और फिर ये जो पोल्स हैं इनकी लोकेशन को देखा करो। क्लियर, और अकॉर्डिंगली आपने फिर डिसाइड करना है कि ये जो पॉइंट है कौन बाहर है। इस केस में रेजिड्यू आपका 0 हो जाएगा और इस केस में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो हियर ओनली वन पोल z is equal to -1 plus 2 iota lie inside the circle this. Okay, therefore fz is analytic within C except at this pole. Okay, so then calculate the residue at this point. So calculate residue at z is equal to -1 plus 2 iota, and limit z tend to -1 plus 2 iota, z minus this point, use this z minus a. So z minus a is this fz, use this definition, right, and when you calculate all these things you will get minus iota plus 1 by 2, and then z is equal to this lie outside the circle, then residue at this point is 0. Obviously this residue is 0. So by residue theorem, integral over C fz dz means integral over fz dz is equal to 2 pi I into residue at this point plus residue at this point, and at this point residue is -1 plus iota plus 1 by 2 plus 0, right. So we obtain pi iota minus 2. That one is the value of the integral where C is z plus 1 minus iota magnitude is equal to 2. Okay. Now similarly calculate third part. Okay. अब थर्ड पार्ट को भी आप ऐसे कैलकुलेट करके देखो। तो थर्ड पार्ट इज -2 less than z plus 1 plus iota is less than 2. Okay, so -2 minus -1 minus iota less than z less than 2 minus 1 plus minus iota. Okay, so it becomes -3 minus iota less than z less than 1 minus iota. अब चेक करो, -3 this one is the origin, -3 this one and minus this, ये आपका आ गया 1 and -1, एक ये आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद ये आपका डायमीटर बन गया। तो जब ये डायमीटर बन गया तो आपका इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से सर्कल बनेगा। क्लियर। अब देखिए -1 प्लस 2 -1 एंड -2 आइटा, ये पॉइंट जो है वो विद इन लाई कर रहा है, और -1 प्लस 2 आइटा -1 एंड प्लस 2 आइटा, ये पॉइंट जो है ये बाहर लाई करेगा। ओके, -1 प्लस 2 आइटा, ठीक है, ये है -1, ये पॉइंट बनेगा, ये बाहर है। क्लियर। तो इस पॉइंट पर रेजिड्यू आपका 0 हो जाएगा और इस पॉइंट पर आपको रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट द रेजिड्यू at f z is equal to -1 minus 2 iota, we obtain limit z tend to -1 minus 2 iota, z plus 1 plus 2 iota, z minus 3 divided by z square plus 2z plus 5. Simplify this one, you will get 1 over 2 minus iota, and second residue is obviously 0 because that singular point, that pole lie outside. Okay, so residue at -1 plus 2 iota is 0. Then by this residue theorem, integral over C fz dz is equal to 2 pi iota residue this plus residue this. Okay, and this residue is 0. Okay, and this residue is 1 by 2 minus iota. Simplify this one, you will get this one is the value of the integral. वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो कॉम्प्लिकेटेड भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सिंगुलरिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारे पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली रेजिड्यू थ्योरम वी कैन अप्लाई। ओके, नाउ वन मोर प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम। ओके, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ओके,
So here fz is equal to, in first problem, fz is equal to 1 minus 2z divided by z into z minus 1 z minus 2, this one, which is analytic within the circle, z is equal to 1 minus 1.5. So this origin, so this point and this point, ठीक है. तो ये कुछ इस टाइप से ही कुछ बनेगा, राइट, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट. अब देखिए इसके पोल्स क्या क्या, z माइनस 0 मीन्स z0 इज ए पोल, z इज इक्वल टू 1 इज ए पोल, z इज इक्वल टू इज ए पोल. सो z इज इक्वल टू 0, ये तो यही बना, ये भी इनसाइड है. z इज इक्वल टू 1, ये बना, ये भी इनसाइड है. z इज इक्वल टू 2, ये बाहर है, ठीक है. तो इस पॉइंट पर रेजिड्यू आपका 0 होगा और इन दोनों पॉइंट्स पे आपको इवेल्युएट करना है. ओके, सो कैलकुलेट रेजिड्यू एट f0. ओके, रेजिड्यू f0. सो व्हेन यू कैलकुलेट रेजिड्यू f0 यू विल गेट 1/2. तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको बहुत सिंपल लगेंगे जब आपको ये पता होगा कि रेजिड्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है. तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत सिंपल बन जाएंगे, राइट. सो रेजिड्यू f0 इज लिमिट z टेंड टू 0 z minus 0 1 minus 2z divided by z minus 1 z minus 2. Okay, so use this definition of this residue, right, and simplify, you will get 1/2. Similarly, calculate residue f1, so you will get 1. And since z is equal to lies outside, so this means residue f2 is equal to 0. Clear? Then use residue theorem. So this integral dz is equal to 2 pi I sum of the residues. So when you substitute the values of residue at each point, you will get 3 pi eta. Okay, तो इस प्रॉब्लम को एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखो सॉल्व होती है नहीं होती है, ठीक है. और अगर सॉल्व होगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस वीडियो को फिर से देख लो, राइट. सो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ. नाउ कैलकुलेट दिस सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम इज हियर वी हैव फंक्शन इज दिस. Okay, z minus 2 4 minus z square which is analytic within the circle z is equal to 1. तो आपका ये सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल है. क्लियर? यहाँ सर्कल निकालना आसान है, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड z नहीं है, ठीक है ना. अगर इस टाइप का कोई सर्कल बन रहा है तो बहुत सिंपल है. फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पोल्स हैं, ये कितने पोल्स जो हैं वो बाहर हैं, कितने पोल्स अंदर हैं. अब z इज इक्वल टू ये बाहर, ओके, ये बाहर हो गया. z इज इक्वल टू आइटा, ये भी बाहर हो गया. z इज इक्वल टू माइनस 2 आइटा, ये भी बाहर हो गया. ये तो सारे पोल्स बाहर है. और अगर सारे पोल्स बाहर है इसका मतलब ये जो फंक्शन है दैट वन इज इलेक्ट्रिक ईच एंड एवरी पॉइंट विद इन दैट क्लोज कर्व सी, राइट. सो बाय रेजिड्यू थ्योरम, okay, residue this is 0, residue at this point is 0, residue at this point is 0. So by residue theorem this result is 0. Very simple. Clear? Residue this 0, residue at this point 0, residue at this point 0. So use residue theorem 2 pi I into sum of the residues, you will get 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोल की लोकेशन है उसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करो. तो एग्जाम में इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपने इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपने जरूर बतानी है. और अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपने सही बताया हुआ है तो ये प्रॉब्लम एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगी, राइट. नाउ लास्ट प्रॉब्लम. So here z is equal to 1.5. 1.5 is again this one, इस टाइप से कर्व बनेगा, राइट. So here z is equal to plus minus 2. तो 1 2 plus minus 2 ये भी और ये तो दोनों बाहर हो गए. z is equal to plus minus आइटा, हाँ ये जो 2 पॉइंट्स है ये अंदर है. क्लियर? ये आपका ओरिजिन है. क्लियर? दिस वन इज origin, right, this one is origin. तो ये दोनों पॉइंट्स बाहर हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों बाहर हैं. ओके, सो these 2 points lying outside. So outside means residue at f2, residue at z is equal to minus 2 is 0. Clear? Now calculate residue f iota and residue minus f minus iota. So when you calculate you will get minus iota by 10 and minus plus iota by 10 and minus iota by 10. So by residue theorem 2 pi I into residue f2, residue f minus 2, residue f minus iota, residue f iota. So 0 plus iota by 10 minus iota by 10. So this term cancel. So ultimately result is 0. No problem, result is 0. इसका मतलब ये नहीं है कि function is analytic at each and every point. No, ये calculation से ये result आ रहा है 0. No issue. Okay. So the value of the integral is 0.
इसका मतलब ये मत मान के चलिए कि फंक्शन इज एनालिटिक एट ईच एंड एवरी पॉइंट. फंक्शन इज एनालिटिक every point except these 2 points. Okay, so due to this reason calculate the residue at these 2 points and use residue theorem and then find the result. और रिजल्ट जो मर्जी आए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट सही आना चाहिए, ठीक है. तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उसमें दे रखी हुई हैं, ठीक है, और उन सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, ठीक है. और जो नेक्स्ट लेक्चर है, यहाँ तो मैंने कम्प्लेक्स इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम और कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला और जो भी रिजल्ट्स हैं उनको यूज करके ये कम्प्लेक्स इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है. बट नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन इज बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, बाय यूजिंग दिस रेजिड्यू थ्योरम and other related topics, ठीक है ना, how can we evaluate complicated real type of integrals. Okay, so next topic is very important, evaluation of real definite integrals. और इसमें भी 4 different kind की problems है, 4 different types की problems है, ठीक है. और वो problems क्या है, by integration around a unit circle, इसको एक problem हम करके देखेंगे. by integration around a small semicircle, clear, इसको भी हम करके देखेंगे. और रेक्टेंगुलर कंटूर की एक आधी प्रॉब्लम हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करनी है. और बाय इंडेंटिंग द कंटूर हैविंग पोल्स ऑन द रियल एक्सिस, अगर रियल एक्सिस के ऊपर अगर पोल है तो उसको बाहर कैसे करना है, ठीक है. और उसको बाहर करके हम ये बताएंगे कि फंक्शन इज एनालिटिक ईच एंड एवरी वेयर, क्लियर, क्योंकि उसको हमने वो कर दिया, इंडेंट कर दिया. ओके, इंडेंटिंग द कंटूर हैविंग पोल्स ऑन द रियल एक्सिस. सो वी हैव दीज 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस all these type of results. Okay, so thank you very much. Okay, bye.